Friends, Jai Sri Ram, welcome to Bharat Marg, and we are so happy to be here with you today. आज का टॉपिक today's topic is absolutely a important topic, very this thing, that is Haldwani Encroachment, where a large amount of railway area has been occupied by the gang. Okay, and now there are namaz happening, and even though there are a lot of Hindus there, they don't show the Hindu face to you, and what is happening there. And today about to happen the bulldozer action because of the High Court order that has been stayed by the Supreme Court. What it means now, the illegally occupied people will stay right there. What that means to the future of the illegal slums and more are going to be discussed today. Please like us, comment us, and join us. Okay, if you are here for the first time with Bharat Marg, please subscribe to the channel, and also please press the notification bell to make sure that we are able to see the notification as we go live along with the topic, so that if you are interested, you can come and comment and participate in the conversation. Bharat ji, Jai Sri Ram, welcome Bharat ji, welcome Ram Kumar ji. Yes. Jai Sri Ram, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Sri Ram. Ram Kumar ji, what does it, the encroachment means? The encroachment and the Supreme Court order today, staying the bulldozer action. हरे कृष्णा। ये जो भारत सरकार की लाखों एकड़ जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल एनक्रोचमेंट देश के दुश्मनों ने खुद करी हुई है या करवाई हुई है, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। तो ये सारी इलीगल एनक्रोचमेंट जो है, इसमें बहुत से विदेशी ताकतों का भी हाथ है। ये अपने एक पहले वीडियो में जो मैंने बाजारों के ऊपर बनाया था आपने, उसमें बहुत क्लियर किया था कि ये रेलवे की जो आसपास है, हॉस्पिटल के आसपास है, एयरपोर्ट के आसपास है, और जो अपनी आर्मी की जो डिफेंस एरिया है उसके आसपास है, इन लोगों ने इलीगल एनक्रोचमेंट करके वहां पर देशद्रोहियों के अड्डे बने हुए हैं। ये खाली लैंड एनक्रोचमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी काम कर रही है। तो हाई कोर्ट ने इसको खत्म करने के लिए एक जो इसका ये शुरुआत है अभी वो की है। आप देखेंगे कि ये तो एक शुरुआत है। जम्मू में भी पहले आपको गई थी ये एनक्रोचमेंट, और अभी तक वो खत्म नहीं हुई है। ऐसे ही दिल्ली में भी थी, और बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे सब शहरों में इन लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है। और उसके बाद ये वहां पर मस्जिदें बना करके धर्म के नाम पर और मानवता के नाम पर लोगों से जो अपनी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। अब इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि अभी ये मुसलमानों का जो एनक्रोचमेंट है वो अभी नजर आ रहा है। इसके बाद आपको देखेंगे तो मिशनरीज, जो ईसाई मिशनरीज हैं, उन्होंने तो इससे भी ज्यादा लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट कर रखी है और अपना इलीगल कब्जा कर रखा है, जो कि इनको अंग्रेज सरकार ने दिया था किसी टाइम, लीज पे दिए थे 1996 तक, और 1996 में सबकी लीजें खत्म हो चुकी हैं। वो भी अभी भारत सरकार को छुड़वानी पड़ेगी, नहीं तो उसके छुड़वाए बिना और बाहर से जो फंडिंग हो रही है उसके रोके बिना ये देशद्रोहियों के ऊपर नकेल कसनी नहीं मुश्किल है। ओके, राम कुमार जी, आर यू एबल टू हियर मी? क्या आपको सुनाई दे रहा है? मैं हाँ, बिल्कुल ठीक सुनाई दे रहा है। ओके, सो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जो स्टे किया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो स्टे किया है, इसका मान्यता क्या है?
why they encourage the illegal occupants. रेलवे में सुप्रीम कब्जा करके फिर कल कोई रेलवे में एक्सीडेंट होता है तो ये हल्ला बुल्ला करेंगे, सबको पैसा दो। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लीगल नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना मात्र बोला है कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए। रिहेबिलिटेट करने से पहले उनके जो पेपर्स हैं, अगर वो वैलिड हैं, उचित हैं, तो तभी इनको वो उसका रास्ता मिलेगा। अदरवाइज जिसके पास कोई पेपर नहीं है दिखाने के लिए, पहले तो ये कहते थे कि हम पेपर ही नहीं दिखाएंगे किसी भी कीमत पे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि इनके पेपर चेक किए जाएं। अगर किसी के पास जो उचित पेपर्स हैं जो उसके लिए उस चेक किया जाए, तो फिर उस चेक करने के बाद उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ किया जाए। अदरवाइज ना तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एनक्रोचमेंट को, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल तो माना नहीं, उन्होंने तो केवल 7 फरवरी तक इसके लिए रोक लगाई है कि इनको एकदम से यहां से ना उठाया जाए मानवता के आधार पर। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी एक बहुत अजीब खेल खेलता है। जब तो हमारे जो आर्मी के और लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनके ऊपर ये लोग आक्रमण करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, गोली चलाते हैं और बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उस समय उनको मानवता याद नहीं आती। हमारा सुप्रीम कोर्ट जो भी है, इन उग्रवादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, इनके लिए उनको मानवता नजर आती है। तो इसलिए मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि मानवता का मापदंड सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये जो फौजी भाई हमारे आर्मी के, पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह के होते हैं, उनके लिए भी तो कुछ मानवता का ये दृष्टिकोण दिखाए ना। मानवता सिर्फ उग्रवादियों के लिए तो नहीं होती। बहुत बहुत सही। भरत जी, what do you say? Now they have fake Aadhaar card. Many of them are Rohingyas, I have been told. Okay, जब भी अपना investigation हुआ, many of the people are Rohingyas who have been settled down to increase the balance, difference करने के लिए। उत्तराखंड में देवभूमि जो जिसको कहा जाता है, it is to do the imbalance on the Hindu population and occupy all our holy shrines. Okay, उधर मजार बनाया जाता है। So what does it means to Hindus? And please go ahead. ये fake, how the government will even find out whether the Aadhaar card is fake or good? See, I will not get into this Hindu-Muslim angle, even if there is one to it. I would like to steer clear of that, and I have only 3 things to point out here. What is the matter? The matter is that there is a group of people. There are 4,000 families who have encroached on railway land, and after due process of law, the railways have managed to get a high court verdict which says that these encroachments have to be demolished and the land handed over back to the railways. That is prima facie the high court order. And today, because it is 50,000 people, 4,000 families, 50,000 people, I wonder what the math is, but the Supreme Court in its judgment or in its view have given an interim stay. It is not a permanent stay, it's an interim stay. Now, which is far more dangerous actually, because interim stay means till the case has been decided. Only God knows how long it will take for this case to get decided in the Supreme Court. It could take 5 years, it could take 50 years, it could take 500 years. So till such time, these encroachers stay put. My basic point is either the High Court was wrong in giving such a judgment. If the High Court was wrong, what is the High Court judge who wrote that judgment going to be done with? Or the Supreme Court is wrong today. You can't have both rights. Second,
50,000 people or 5 lakh people. An encroacher is an encroacher. Just because 10,000 people join together and say, okay, we'll loot a bank, are you going to say that 10,000 people cannot be imprisoned? So, let's keep a blind eye to a robbery? What kind of logic is this? Or what kind of law is this? Third, slightly more comical for people who have not done basic research. I don't know how many people have heard of a place called Khori Gaon. Khori, Hori. Khori Gaon. This is at the foothills of the Aravalis in Faridabad. Now, 1 lakh people, 100,000 people had illegally encroached upon forest land, upon land which they did not legally own. On 23rd of July, 2021, just 1.5 years, the Supreme Court has given a judgment that even if it is 1 lakh people or 100,000 people, if it is an illegal encroachment, you have to demolish. But Albeit this is the they point, have- Bharatji. This is One the second. point. I know Let me you want finish. okay. 1 minute. Yeah, let's keep emotions at bay here for a minute. Now, the Supreme Court has also said that there should be some compensation, or there should be, given some kind of human help with regard to relocation and blah, blah, blah. But the demolition was ordered by the Supreme Court. Now, 1 lakh people, I'm not getting into the religion, I'm not getting into their caste, I'm not getting into what faith, I'm not getting into the politics or religion part of it. I am saying simply as a matter of law. What is good for the geese is good for the gander. Why did the Supreme Court order a cleaning up of the encroachers at the Aravalis, which were double the number of people here? And here they have given a interim stay, which basically means you are perpetually pregnant. You don't know if there will ever be a child or not, but it's a perpetual pregnancy. Yeah, you know what? This is where I don't steer clear. I want to say as it is. The 1 lakh people were not Muslim dominated. Okay? That means, let's face it, the truth is a truth is a truth. Because in this country, Hindu life doesn't matter. For Supreme Court, Hindu life doesn't matter. Even though there are 1,000 families there in the current encroachment with the Hindus, their faces are not put in. Majority of them are Muslims, who's put in there as a face of the Andolan, of the encroachment Andolan. So the Supreme Court is very, very partial. What Ram Kumar ji, आप मेरे बात मानते हैं? Supreme Court is partial. As per what Bharat ji says, 1 lakh people, displacing them is okay because they were Hindus. No, I am not saying anything out of. No, I'm not you putting are not rabbit out of saying. the hat. You are not I'm saying. saying a matter of fact. No, Just I am Google it and saying you'll my get it. side of the fact. I am saying my side of the fact. 1 lakh people are okay to get displaced if they are Hindus. If they, 50,000 people, encroachment, same problem. जहां उत्तराखंड में देवभूमि में demographic changes are being made very, very intentionally. फिर ये प्रॉब्लम है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि ये हिंदू नहीं है. इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर, जैसे भरत जी ने बोला ना कि एनक्रोचर इज एनक्रोचर एंड इलीगल इज इलीगल, मे बी व्हाटसोएवर, मे बी हु, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू. और इसके लिए तो आपको ये मानना पड़ेगा और धीरे धीरे बिल्कुल सामने आएगा कि नॉट ओनली इन देवभूमि उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर या हिमाचल या अरावली एरिया, ये तो पूरे देश के अंदर इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं.
और एनक्रोचर को एनक्रोचर ही माना जाएगा, चोर को चोर, डकैत को डकैत, लॉ को लॉ, सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैंने पहले पहले भी जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी मानवता इनके लिए दिखती है, इनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनको दिखता है। जब वो हमारे देश के अंदर बम चलाते हैं उस समय इनको मानवता नहीं नजर आती कि ये छोटे छोटे बच्चों और मासूमों में और जो बिल्कुल भोले भाले लोगों को उड़ा देते हैं बमों से, तो उस समय उनको मानवता नजर नहीं आती। इनके लिए तो रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है, किंतु जो दूसरे लोग हैं उनके लिए इनको कोई मानवता नजर नहीं आती। पर मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट मामला बिल्कुल पार्शियल है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट पार्शियल है। अगर पार्शियल ना होता तो नूपुर शर्मा वाला मामला भी ऐसे ना होता। तो ये जो मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट पार्शियलिटी बिल्कुल दिखाई दे रही है, और मैं कहता हूं कि इसमें बिल्कुल सख्ती से, जैसे नैनीताल हाई कोर्ट ने बोला कि इनको बलपूर्वक यहाँ से उठाया जाए। किसी क्रिमिनल के साथ अगर आप मानवता दिखाएंगे, क्रिमिनल के साथ आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो बड़ा सख्त होना पड़ता है, तभी जाकर के लॉ ऑर्डर मेंटेन होता है। डेमोग्राफी की बात आपने करी है, तो पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी डेमोग्राफी खराब करने की कोशिश की, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। अब ये जो लोग हैं यूपी से जो भगाए हुए क्रिमिनल हैं माननीय योगी जी के द्वारा, वो दूसरी अदर स्टेट्स में भी ऐसी डेमोग्राफी खराब करा रहे हैं। और यहाँ तक आपने बात की कि इनके जो इलीगल वो बन जाते हैं, आधार कार्ड बन जाते हैं, वोटर कार्ड बन जाते हैं, तो वो सारा तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इनकी जांच होगी, इनके पेपर्स की जांच होगी, तो वो सारी चीजें सामने आएंगी। उसमें ये भी निकल के आएगा कि इनमें से कितने रोहिंग्या हैं, कितने बांग्लादेशी हैं, कितने कहाँ से आए हैं, कितने कौन से स्टेट से क्रिमिनल उठ करके यहाँ आए हैं। तो ये चीजें सारी जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इनके कागजों की जांच होगी, वो पता लग जाएगा कि ये इनके नकली, जाली, फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, वो सारे कैसे बने हैं। तो इसमें जो पिछली सरकारों की ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस लपेटे में आएगी और आनी चाहिए। इनको रेगुलराइज करने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये बिल्कुल एक अकाट्य मान्यता है कि बिल्कुल इनको रेगुलराइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। भरत जी, question to you, okay, very straightforward, okay. See, Supreme Court I see like this, okay, there is no justice for me, okay, in Supreme Court, okay, let me face it, okay, this I am saying, this is my stand, okay. So you know, Sikh genocide cases can be reopened, you know, another genocide cases can be reopened, but Kashmiri Pandit cases cannot be reopened because it is too old. Encroachment by Hindus can be reopened and bulldozed, but the Rakshas cannot be reopened. What do you think of it? It's very impartial. Like you said, you know, what is happening one case to the other case? Will they refer the old case? What their response will be? All right. Dilip, first and foremost, I don't know who has given you this wrong impression that there was any justice done for the Sikh genocide in 1984. I don't know who told you that, but it's been close to 4 decades, and you know nobody has been sent to the gallows or even to jail. Jagdish Titler is walking around a free man, and the other gentleman, supposedly who had a big hand, was holding a constitutional post. So, you know, let's not talk about justice, because in India, justice is a joke. And I have huge problems in the judiciary, or, you know, when anybody for that matter, why just the judiciary? Anyone who says that, you know, we have to be sympathetic towards criminals or criminal accused. There is no scope for sentiments, emotions in law. Law is a very, very clear black and white. Either you are a culprit or you are innocent.
You can't be a culprit who could be an innocent, or chalo theek hai, it's okay. Every, whether he is a pickpocket thief, or whether it's a bank robber, or whether it's a murderer, or whether it is whoever, even a terrorist for that matter, will have an emotional side to it. He will have an emotional प्रिंसिपल का बेटा है. logic, or he could have an emotional trait to whatever he has done. Does that absolve him of his wrongdoings or his illegal activities? Absolutely not. This kind of talk that we have to look at it from a humanitarian point of view is absolute bunkum. I'm sorry, I'm using very strong language, pardon me, but this is pure nonsense. Absolutely. A judge is supposed to deliver his verdict based on facts and the proof and the testimonials which have been presented to him. He has no authority to bring in emotions and his logic or sentiments or humanitarian things. There is no space for all that. Absolutely. My Yeah. problem with the judiciary is when the judiciary draws their salary, perks, everything from the consolidated fund of India, which has contribution from every taxpayer, and every taxpayer stroke voter in India. We are a representative democracy. We are represented by a member of parliament. Now, member of parliament does not have the right to question this kind of a judgment. This is absolute nonsense. I do not understand how anybody in their right mind can, have any kind of sympathy to an encroacher. Tomorrow I come to your house, I'll encroach your house. I'll say, boss, I have nowhere to go, so I'm going to encroach your house, and you bloody well go and stay on the street. 100 people can come in, and then what the judge, the judiciary, what are they going to say? Oh, just because 100 people are at stake, one person or 4 people can go out on the street and beg for a living? What kind of bottom is this? Wonderful. I'm going to ask you last word. Okay, finished kar diye? You are saying you have anything to say, Bharatji? Can we go for the last word? No, I'm done. There is nothing to say on nonsense. Okay. I don't like to. My last word. Okay, 30 seconds each. खत्म करेंगे. राम कुमार जी, अब्दुल्ला के लिए एक जस्टिस, आदित्य के लिए एक जस्टिस, ये किधर को जाके खत्म होने वाला है? एक्टिविज्म, सुप्रीम कोर्ट है, ये एक्टिविज्म है. ओके, 30 सेकंड्स में बोलिएगा. वी विल वाइंड अप. लास्ट वर्ड. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अब्दुल के लिए, आदित्य के लिए क्या, सबके लिए कानून एक है और कानून एक होना चाहिए. कोई पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए इसमें. तो ये तो बिल्कुल बराबर का काम है. और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी तो ये जो गवर्नमेंट की लैंड जो अभी सामने आ रही है, उनके ऊपर एनक्रोचमेंट हटाने की प्रयास हो रहे हैं. इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड ने भी नजायज कब्जे किए हुए वो भी छुड़वाने चाहिए. और ईसाई मिशनरियों ने जो कब्जे कर रखे हैं, इलीगल एनक्रोचमेंट कर रखी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स के नाम पे है, चाहे वो अपना उसमें स्कूल के नाम पे है, कॉलेजेस के नाम पे है, वो भी हटानी चाहिए और हटानी पड़ेगी. ये मेरा मानना है. और सबके लिए कानून एक होता है. इसके लिए किसी को भी अलग से नहीं देखा जाना चाहिए. कानून का चश्मा सबके लिए एक होता है. Yeah, wonderful. Last word, Bharatji. Activism or justice? Supreme Court. It is pure activism. There is no justice in this. It is activism. Land owned by the government and encroached upon by people. Judiciary says whatever it says, which has given an interim stay. It has not actually said anything much. But I don't understand how can you regulate encroachment? Tomorrow, if 1,000 people go into Supreme Court and encroach on that land, will they do the same thing? No. Many of the court are on the encouraged. Even Madras, I just did a video on it. Madras. No, I'll send them. I'll send. What if 10,000 people go into Supreme Court judge's house? No, don't say that.
you know, because ये तो elite है, उनका घर को मत भेजिए. Okay, but नहीं anyway. उनका घर ही नहीं है, वो तो मेरा घर है भाई, टैक्स पेयर का घर है. They have been given accommodation. It is not their personal property. Sorry. बिल्कुल. You know, but it is absolutely my last word is simple. It's a thank you Bharat ji, thank you Ram Kumar Sethi ji, but you know, it is absolutely mind boggling. Okay, Abdullah के लिए एक ला भारत में, आदित्य के लिए एक रा, you know, ये कब खत्म होगा? This question mark. What do you think? Comment and share. Looking forward to see you all. Thank you again. Hare Krishna. Thank you for Hare Krishna.